topic is role of design thinking in building a digital experience. So basically, it's good to understand that what is actually design thinking. कुछ लोग मतलब ऐसे ले जाते हैं कि design is equivalent to design thinking, but that is not the case. So design comes after the application of design thinking. So let's cover the what first. Like what is design thinking actually? So design thinking is a mindset that helps you solve problems creatively. Now, what does this statement mean? So, like as you have heard this example very much, you know that there was a truck and it got stuck under the bridge. So एक ट्रक था जो ब्रिज के अंदर एक फंस गया एंड वो निकल नहीं पा रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइट इशू. उसकी हाइट बहुत ज्यादा थी और ब्रिज से वो बिल्कुल एग्जैक्ट हाइट पे आके मैच हो गया. तो उस टाइम पे ये हुआ कि एवरीबडी वाज फिगरिंग आउट कि कैसे करें, पूरा ट्रक खोल दें या डिसमेंटल करें या उठा के रख दें या ब्रिज तोड़ना पड़े, व्हाटएवर. मतलब सब लोग अपना दिमाग चला रहे थे कि कैसे करना चाहिए. देन केम अ स्मॉल बॉय, अ फ्रेश माइंड, एंड ही सजेस्टेड दैट व्हाई नॉट you just take out the air from the tires, क्योंकि ट्रक के टायर्स बहुत बड़े होते हैं. तो उसने बोला कि क्यों ना हम इन पहियों की हवा निकाल देते हैं, तो वो अपने आप हाइट कम हो जाएगी और ट्रक आराम से निकल जाएगा. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड, दैट एज सून एज दे punctured those tires, truck आराम से निकल गया. So what that boy does was actually provide a solution at that instant of time, and that is what design thinking actually is. So a very simple example to explain कि design thinking हम लोग real world में भी apply कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ digital products या applications या websites में apply करें. design thinking कहीं भी apply हो सकती है. और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम अभी देखेंगे, जो एक डॉन नॉर्मन, एक यूएक्स रिसर्चर है, तो उन्होंने एक थ्योरी दे रखी है और जो प्रॉब्लम्स आप लोग रियल वर्ल्ड में फेस करते हो वो डिजाइन थिंकिंग से रिलेट होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सिट ऑन अ चेयर, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि चेयर अनकंफर्टेबल है या कंफर्टेबल नहीं है. तो वो जो चेयर है वो भी किसी डिजाइनर ने डिजाइन करी है, उसने भी एक डिजाइन थिंकिंग अप्लाई करी है, राइट. तो वो अनकंफर्टेबल है, दैट मीन्स दैट इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ बैड डिजाइन. दैट डिजाइन थिंकिंग was not involved in that process. So it's all about the desirability to actually create a design, get into the design thinking, and then the viability, that whatever the solution that the designer is proposing or anyone is proposing is viable or not, and then the feasibility, that either it is feasible or not, right. So these three are the major components, and the design thinking comes in the desirability part. The overall thinking, जब आप किसी क्वेश्चन या किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो, that is where the desirability comes, that you want to do something to get a solution to solve a problem. So that is what desirability is. So design thinking is also an iterative process. So iterative process से मतलब ये है कि when you make a product or when you think about a solution, ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में बिल्कुल करेक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा. ठीक है, यू मेक दी एमवीपी प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम लोग, या फिर एक छोटा सा मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे हमें ये पता लग जाए कि एक्चुअली जो हमारा सोल्यूशन है वो वर्क करेगा कि भी नहीं करेगा, राइट. तो यूजर्स के लिए वो फीजिबल है या नहीं, या यूजर्स को वो सोल्यूशन चाहिए, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट. तो ऐसा नहीं है कि एक बार में डिजाइन थिंकिंग अप्लाई हो जाएगी एंड मैजिक हो जाएगा, ऐसा नहीं है. इट्स एन इटरेटिव प्रोसेस, इट कीप्स ऑन गोइंग ऑन until unless you achieve the proper solution of it. And for that you just need to have the empathy for the users, ki whenever you are thinking of a solution for a problem, just keep in mind that whoever is using that product will be comfortable using it, or will achieve his or her expectations, will have that goal defined before using that product. So it is all about getting into the user's shoe and experimenting and applying those solutions. So let's quickly jump to the why. So the why is why design thinking. All this sounds nice, I mean this looks good, ठीक है, but why bother? हम लोग क्यों डिजाइन थिंकिंग के बारे में सोच रहे हैं? हमें पता है कि बटन लगा के स्क्रीन बना के और हमें प्रोडक्ट शिप कर देना है, राइट. हम लोग क्यों सोचें कि मतलब एक लिस्ट व्यू कैसा होना चाहिए, या फिर एक चेयर अगर कोई डिजाइन कर रहा है, या कीबोर्ड कोई डिजाइन कर रहा है, लैपटॉप कोई डिजाइन कर रहा है, मॉनिटर कोई डिजाइन कर रहा है, कुछ भी कोई डिजाइन कर रहा है, वो क्यों सोचें? आई मीन उनको पता है कि ट्रेडिशनली लैपटॉप कैसे काम करते हैं और वो डिजाइन करके सीधे शिप कर देते हैं. तो एप्पल की डिजाइन टीम क्यों हर साल एक नया प्रोडक्ट डिजाइन करने में अपना टाइम वेस्ट करती है, राइट. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस द वे इट शुड बी, राइट. सो लेट्स कम टू द नॉर्मल डोर्स. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, और तनुश्री और आयुषी को पता होगा क्योंकि मैं क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछता हूँ. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई आस्क अबाउट द नॉर्मल डोर्स.
सो दिस इज अ बेसिक प्रॉब्लम जो आप सब लोग फेस करते होंगे. तो आज ये एचआर टीम हमारी ऑफिस गई है. आई एम श्योर कि ऑफिस के डोर्स में भी प्रॉब्लम होगी एंड आई जस्ट पॉइंट इट आउट कि वो प्रॉब्लम क्या है. सो मतलब नॉर्मल डोर्स क्या होते हैं. सो देयर वाज अ साइंटिस्ट यूएक्स रिसर्चर कॉल्ड डॉन नॉर्मन. उनकी एक बुक आती थी डिजाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स. तो उसमें उन्होंने ये डोर्स की प्रॉब्लम को बताया था एंड द सोल्यूशन टू सॉल्व. सो व्हेन यू वॉक इनटू अ शॉप, आप जब एक डोर देखते हो तो उस पे आप हर बार कंफ्यूज होते हो दैट वेदर दिस डोर इज अ पुश और अ पुल. राइट, इवन इफ इट इज रिटन दैट इट इज अ पुश और अ पुल, उस पे हैंडल लगा हुआ है जिसको आप ग्रैब करके, आपका फर्स्ट इंस्टेंस डिपेंड करता है कि उस पे लिखा क्या हुआ है, इधर इट इज पुश और अ पुल. तब भी आप कंफ्यूज हो जाते हो. सो दैट इज समथिंग व्हिच क्रिएट्स अ ब्लॉकेज इन अ यूजर्स जर्नी. The user's journey is to get into the shop, to step into the room. लेकिन वो डोर खोलने के लिए शायद ऑब्स्ट्रक्शन आता है 1 से 2 सेकंड का. सोचना पड़ता है उसको कि मुझे करना क्या है. So that is an example of bad design. If the user is thinking कि उसे करना क्या है and your design is not able to tell him or her कि how this door operates, then it is an example of bad design. So providing a handle on the door to grab actually signifies that it is a pull, right? So you don't need to write a pull on a door with a handle. And now you might be asking कि अगर वो push है तो क्या करें. So for pushing, do you have that instinct कि किसी चीज को पकड़ के push करें? No, you just use this palm and you just push that door inside, right? So this is what modern solutions work, and many doors are now adapting this. Many people are now adapting this. That for a push, they just provide a bar on the door, and you just the first instinct of the user is that there is no handle to grab, so you cannot pull it. Okay, so you just can only push it. So just don't provide a handle if you want a door to be pushed, and if you want it to be pulled, just provide a handle. If you want a locking system, just provide a knob. So that is basically a design thinking, the design example. And ये आई एम श्योर कि बहुत सारे यूजर्स जो मतलब बहुत सारे लोग जो फेस करते हैं डेली लाइफ में अपनी एक मेजर प्रॉब्लम है. एंड यहाँ पे जो एक बैड डिजाइन का एक एग्जांपल आ जाता है. और ये डोर्स मतलब अभी तक करेक्ट नहीं हो पाए हैं, बट दे शुड बी करेक्टेड एंड डिजाइन थिंकिंग शुड बी अप्लाइड एवरी टाइम when you are designing such things that people usually use. So moving on to digital design thinking. So now let's come to a topic which is role of design thinking in building a digital experience. Right. So now digital design thinking से हम लोग ये मानते हैं कि whenever we are making a product, whenever we are making a digital product like a website or an application or some sort of e-commerce product, then जो भी components होते हैं, जो भी interactive elements होते हैं, वो कहाँ से आते हैं. So let's get back to times where digital products never existed, right? So let's come to elements. A button is something you click it when you tap on it, right? So where it comes from. So जब UI नहीं होता था, जब interfaces नहीं होते थे, तो button was a physical substance, right? And it looked just like a shirt button or a button that can be just pressed. A switch is something that has two way to it, an on and an off, that we provide in the UI, and on and an off. A keyboard is something that you type, so where it comes from a typewriter. The scroll is actually something, in ancient times we used to have big paper and they were named as scroll, right? So the scroll, the name, the terminology comes from there. So ये जो चीजें होती है ये कहाँ से आई हैं, मतलब UI में they were born from real life, like the initial design thinking was already there, was already present. We just took these components from real world and put them in the interface, right? So this is how digital experiences are built. So अगर आप ज़्यादा ना सोचिए, अगर एक UI बनाते हो, बस इतना सोचने कि when you are making a UI, when you are designing an experience, a digital experience, just think that जो यूजर है वो अगर रियल लाइफ में इस प्रोडक्ट को यूज करता है या अगर इंटरेक्ट करता है, अगर एक फिजिकल वर्ल्ड, तो वो कैसे इंटरेक्ट करता है, उसकी यूजर जर्नी क्या होगी, right? And that is where you adapt the most of it, their circumstances, their conditions into your UI. वो लोग कैसे सोचते हैं, कैसे करते हैं. अभी तो ये होता है कि शॉपिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है. शॉपिंग एक्सपीरियंस, when you're making a shopping application, when you're making an e-commerce application, just keep in mind that you are standing in an e-commerce store or a store, a shopping mart or a mall, and you see different shops. How would you purchase the product? You just need to bring that experience live into your Flipkart, Amazon. सबका experience same है. It's almost ऐसा नहीं है कि कोई कुछ अलग कर रहा है, सब लोग वही कर रहे हैं, because we know that people have this habit and they have been shopping like this for years.
बस अब उस चीज को उन्होंने ऑनलाइन कर दिया कि ठीक है ये यूआई है, डिजिटल एक्सपीरियंस आप चेकआउट कर सकते हैं। बट द इनिशियल द एस्थेटिक ऑफ द प्रोडक्ट, द होल थॉट ऑफ द प्रोडक्ट, the whole birth of the product is all about how they experience that in the physical world. So yeah, let's come to some of the case studies. The red and black theme of Netflix UI, right? अब एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि मतलब रियल लाइफ से इंस्पायर होके या उस एक्सपीरियंस से इंस्पायर होके कौन सी कंपनीज ऐसा काम कर रही है. So the color scheme of Netflix is inspired from the real world theatrical experience where the seats are red and the ambience is dark. Right? So Netflix की जो पूरी color scheme है वो dark है just because the cinema hall में अगर आप जाते हो किसी भी थिएटर में जाते हो तो वो रूम पूरा डार्क होता है and the seats are red. So that is where they derive their color scheme. And there is also an interesting observation जो बहुत सारे designers ने notice नहीं करते, but there are very little talks about their logo also. So if you see their logo, it's actually a wide screen. It's actually a theatrical screen. It is curved from the bottom. Right, so this is this is what they're trying to portray, that it is just a very big wide screen which is just curved from the bottom. So that is how the theater, they wanted to bring that experience, they wanted to bring that feel of watching a movie into a theater, and you're sitting on your laptop and you're just watching, they want to have that kind of experience. Obviously Netflix के मतलब अपने अलग flaws हैं, they have their very bad recommendation system and everything, but they are still working on it. So that is the part of some other presentation someday, some other day. So this is Netflix example. Now let's come to the Zomato. So ये मैं open करता हूँ बाकी सब लोगों के लिए. Maybe 2-3 लोगों को पता होगा क्योंकि मैंने इंटरव्यू में पूछा था ये क्वेश्चन. So food ordering app है, for example एक simple Zomato app है. So what is the most important element in a food ordering app and how can it be used to meet business goals? So अगर मतलब if anyone wants to answer this, ठीक है, जिसको पता है मतलब I know कि किसको पता है, I think तनुश्री को पता होगा और शायद आयुषी को पता होगा, because that is something also जो मैं इंटरव्यू में पूछता हूँ. तो इन दोनों के अलावा अगर कोई सोच के कोई बताना चाहे कि एक एप्लीकेशन को, एक फूड ऑर्डरिंग एप्लीकेशन को सबसे ज्यादा इंट्यूटिव क्या चीज बनाती है और वो कैसे यूज कर सकते हैं. मतलब इस स्क्रीन में है आंसर आपका, और इस स्क्रीन में उन्होंने ऐसा यूज भी कर रखा है अपने बिजनेस गोल को मीट करने के लिए. लाइक फूड की इमेजेस, आई गेस. या आई थिंक इमेजेस एंड कॉम्बिनेशन बना के देते हैं ऑफ डिफरेंट फूड टुगेदर मेरे ख्याल. प्रोबेबली कि वेज है नॉन वेज है उसका अलग से टैग है जो ओके. मतलब So, और गैस करना नहीं, मैं मतलब पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं बताऊंगा सही है, वरना फिर और कोई गैस करने बंद कर देगा ना अगर मैंने बता दिया तो. अगर और कोई गैस करना है, मतलब ये तो पहला क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं सब लोग, बट हाउ कैन इट बी यूज्ड टू मीट बिजनेस गोल्स. मतलब पूरा क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या एलिमेंट है और बिजनेस गोल कैसे, मतलब बिजनेस गोल एट द एंड की ऑर्डर प्लेस करना. लाइक अगर हम फूड की इमेजेस देख रहे हैं और एक सिनेरियो हम इसमें सिर्फ नेम्स पढ़ रहे हैं तो ज्यादा चांसेस है अगर हम फूड की इमेजेस देख रहे हैं तो हम टेम्प्ट होंगे कि हमें उसे ऑर्डर करना है या फिर खाना है उसे. और अगर हम सिर्फ नेम्स पढ़ रहे हैं, लाइक पढ़ के हम स्क्रॉल कर देंगे, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता है. जस्ट लाइक बहुत लोगों का होता है कि अगर बुक्स पढ़ रहे हैं वो और बुक्स में कोई इमेजेस नहीं है तो कोई इंटरेस्ट नहीं आता लोगों को पढ़ने के लिए. तो सिमिलरली जोमेटो ऐप में अगर सिर्फ आपने नाम लिख के दे दिया, आप एक लिस्ट बना सकते थे कि आपने लिस्ट बना दी ये फूड हम वो करते हैं, रेस्टोरेंट्स में वो ऑफर करते हैं, तो उसमें कोई फायदा नहीं होता क्योंकि हर कोई बस स्क्रॉल करता है और किसी को कोई मन नहीं करता, कोई टाइम नहीं करता उसे बाय करने के लिए. तो मेन पॉइंट इज कि आप उन पे इमेजेस दो और लाइक जो उसका वेज और नॉन वेज के साइंस से सिंबल्स होते हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग उसके लिए भी होता है कि वो नॉन वेज है या वेज है या एगलेस है, वो उस पर भी डिपेंड करता है. ओके, ठीक है. सो एक कंप्लीट आंसर हमारे पास आज का, और इफ एनीवन समवन एल्स वांट्स टू गेस. ये इसमें इमेजेस ही है जो इसका मेन कंपोनेंट है जिसकी वजह से बिजनेस गोल्स मीट कर रहे हैं. मतलब लाइक अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पे मेन्यू कार्ड देखते हैं, इट्स वेरी हार्ड फॉर अस टू ऑर्डर अ डिश. वो उसका रीजन यही है, कुछ दिखता नहीं है कि क्या आने वाला ऑर्डर करने में, एंड क्या कहते हैं
बहुत टाइम लगता है हमें बेसिकली एक मेन्यू कार्ड से ऑर्डर करने में, तो इसमें तो इमेजेस ही है, उसी के ऊपर उन्होंने वो लगा रखा है ऐड का बटन। ओके, सो ठीक है, मतलब most of the people got कि images, the food images are the one component that makes this UI very intuitive. So basically where it is derived from, तो like मेरे contact में एक Zomato के designer है, मतलब ex designer, जिन्होंने जो sushi system है उस पे काम कर रखा है. Sushi is the design system of Zomato. So I asked this question कि where did you get this idea of placing the image like this इतना बड़ा and then left align the text ऐसे. So he said that if you go to McDonald's, they don't have a menu card separately. You just go to the counter and you see up and you will see the whole menu displayed with large images and very small text on it. And you can see कि combo में क्या क्या है, अगर price का combo है और happy meal है तो उसमें क्या क्या, you can see that in the image and it is very easy and fast to make a choice. That is why McDonald's is known for its speed. McDonald's जब फाउंड हुआ था तो उसका यही था कि 5 मिनट के अंदर आपको बर्गर दे देंगे. तो दे वांटेड टू मेंटेन दैट पार्ट. तो उन लोगों ने जो ऑर्डर करने का जो प्रोसेस है वो भी फास्ट कर दिया. लाइक दे जस्ट वांटेड टू द यूजर टू सी दैट इमेज एंड मेक द चॉइस. अब जोमेटो ने भी सेम फॉलो करा. दे गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट. उन्होंने सेम उनकी हर इमेज में अगर आप देखोगे तो कॉम्बोज में भी दे हैव मेड श्योर कि जो इमेज यूज हुई है उस इमेज में एवरीथिंग इज डिस्प्लेड क्लियरली सो दैट यूजर डोंट इवन हैव टू रीड कि क्या लिखा हुआ है. दे जस्ट सी कि ये है एंड देन दे टैप एंड बाय. And the one thing that they have done that to meet the business goal to use that image is putting that add button on the image itself, right? So if you are a right-handed person and you are using, most of the people are right-handed, so if you are using this application, the add button is just below the image. So as soon as you see the image, you get an instant to click on it or click on the area near it. तो उन्होंने add button भी image के ऊपर लगा रखा है and now the same system is being followed by Swiggy. iOS में तो Swiggy में है, I think Android में ये वाला इस टाइप का layout नहीं है. I'm not sure, but this is something that Zomato is following, and that has made their order process काफी quick. मतलब हम लोगों के लिए वो इतना quick नहीं होगा because ये होता है कि हम लोग एक यूजर हैं, but उनके पास मिलियन यूजर्स हैं. उनको मिलियन यूजर्स का डेटा अगर स्टार्ट करें तो वो सिग्निफिकेंट टाइम वो लोग काफी बचा लेते हैं. तो एक ये पॉइंट है जो Zomato फॉलो करता है and they have been inspired from real world example जो McDonald's actually फॉलो करता है. So these are the two examples. Now just coming to something very technical which is Jacob's law. अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डिजाइनर्स के पास आते होंगे कि आपने UI बनाया, ठीक है, आपने पोर्टल बनाया, आपने एप्लीकेशन बनाई, इसमें नया क्या है. जैसे आप ई कॉमर्स की एक एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है, या फिर एक शॉपिंग एप्लीकेशन या ग्रोसरी एप्लीकेशन बना रहे हो, वो बोलेंगे आपसे कि कुछ नया क्यों नहीं किया, कुछ अलग क्यों नहीं किया. तो दिस इज वेयर द Jacob's law depends us, which is why is it important for design thinking? Users spend most of their time on other sites. This means that user prefer your site to work the same way as all the other sites they already do. So again, Flipkart और Amazon पे आ जाते हैं. Jacob's law is mostly applied to the websites. So वापस से Amazon Flipkart पे आ जाते हैं, right? तो अगर मैं Amazon का यूजर हूँ, ठीक है, मैं Amazon बहुत यूज करता हूँ, मुझे पता है कि कार्ट का मतलब क्या होता है, ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, पिन कोड कहाँ पे डालते हैं, एड्रेस डालना पड़ता है, फिर कॉम्बोज कहाँ पे होते हैं, रिव्यूज का सेक्शन कहाँ पे होता है, FAQs का सेक्शन कहाँ पे होता है, हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, नेविगेशन कहाँ पे होता है, ये सब मुझे ऑलरेडी पता है. ये हर वेबसाइट में होता है और ये मैं सालों से यूज करता आ रहा हूँ. अब कोई एक नई वेबसाइट निकाल के ले आएगा जिसमें नेविगेशन बॉटम पे दे रखा है, ठीक है, फुटर है ही नहीं, फुटर ऊपर कर रखा है, ठीक है, इमेजेस कहीं और है और ऑर्डर प्लेस करने का फ्लो बिल्कुल अलग है. मतलब पहले ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपको पिन कोड डालना है या वो सब डालना है, तो जो फ्लो है वो अलग है. तो यूजर जो है इरिटेट हो जाएगा, उसे हो सकता है UI बहुत अच्छा लगे, एस्थेटिकली अपीलिंग हो, मतलब एलिमेंट्स का एनिमेशन सब कुछ अच्छा हो, बट डू यू थिंक दैट इट कैन मीट द बिजनेस गोल इन. अगर Amazon पे ऑर्डर करने में मुझे 10 सेकंड लग रहे हैं और Flipkart पे ऑर्डर करने में मुझे 11 सेकंड लग रहे हैं, तो जो नई साइट बन के आएगी उस पर ऑर्डर करने में मुझे शायद 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि उस पर कौन सी चीज कैसे होगी. So that is why the Jacob's law stands its ground कि अगर जो भी हम लोग एक्सपीरियंस बना रहे हैं, it should be in line with the experience that the user is already using. Until unless हम लोग कोई बहुत ही नई चीज बना रहे हैं, अगर हम e-commerce एप्लीकेशन या वेबसाइट बना रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस भी सेम होना चाहिए जैसा कि बाकी प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, बाकी रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस होता है, राइट? So this is what Jacob's law is. So this is the last slide, an important slide. Next time if you are thinking to build a grocery app or thinking of an idea, एक बार सब्जी लेने चले जाना.
just because if you are experiencing that in real world, experiencing that in actual life, then only you can better understand the users कि वो लोग actually क्या चाहते हैं and how they want to pursue your product. So before building a product, it's important to observe real-world experience of the user journey, because at the end of the day, you are trying to build a solution for an existing problem. So there is a problem that is already existing, और उसका solution design करना है आपको. You have to always keep in mind at every step कि जो भी हम लोग design कर रहे हैं, उससे वो problem solve हो रहा है कि नहीं. I mean, if you have that recurring thought every time you make a product, I think design thinking को apply करने से अच्छा तरीका और कुछ नहीं. So keep that thought in mind, and every time you see an object, every time you visit an experience, उससे हर बार question करना कि why this is like that. So if you are encountering a door next time, so just view that door कि वो कैसे बना हुआ है, and just think कि उसे और better कैसे कर सकते हैं. So yeah, that is it from my side. शुक्रिया.